Hello, everyone. A small piece of note for all of you. We'll be taking an industry pledge during the course of this event. We request all of you to please take the pledge with us, and the same will be broadcasted for all the audiences that are watching this event live. Thank you so much. asked for some chairs to come this side. सभी पार्टिसिपेंट्स अपना वीडियो ऑन करके रखेंगे। कर रही है।
All the participants, please switch on your video. Munira ma'am, Munira ma'am, can you hear me? Ma'am, please Yes, yes, I on can your hear video. you. Can you hear me? Okay, ma'am. Okay, yes, yes, ma'am, yes, ma'am, yes, ma'am. Okay, great. Okay, ma'am. मैम वीडियो भी क्लियर है उनको बोलो ज्वाइन रहे मैम ज्वाइन रहना है ना डिस्कनेक्ट मत होना अब नीतू भूषण जी Yes, I can see and hear you. yes 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 ma'am please turn on your camera Yeah, can you see me? okay My ma'am camera yes is ma'am on. yes yes ma'am Thank you. मैम प्लीज ज्वाइन रहना मैम ठीक है ना डिस्कनेक्ट मत जी होना आप जी जी Sidhu sir, good morning and good morning from Parvanu. Good afternoon from Parvanu. Good afternoon. Good afternoon. Good to hear your voice, sir. Thank you. हेलो 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 नहीं आ रही
Hello, hello. Hello, hello. Hello. हेलो 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 वेबएक्स पे हेलो हेलो अभी आ रही होगी हेलो Namaskar, good afternoon. Welcome, ladies and gentlemen, to this joint event hosted by the Ministry of Women and Child Development and the Ministry of Labour and Employment, Saksham Nari, Sashakt Bharat, Women in the Workforce for Viksit Bharat. We're delighted to have with us this afternoon the Honourable Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Srimati Smriti Zubin Irani, the Honourable Minister for Labour and Employment and Environment, Forests and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, the Honourable Minister of State for Women and Child Development and AYUSH, Dr. Munjpara Mahendrabhai, and our secretaries, the Honourable Secretary, Ministry of Labour and Employment, Ms. Aarti Ahuja, and the Secretary, Ministry of Women and Child Development, Mr. Indivar Pandey. Ladies and gentlemen, a round of applause as welcome to our guests who are here. Today's event will include the official launch of 3 significant initiatives, crucial advisories that are being given out by the ministries, emphasizing sustained initiatives to enhance women's education and employment,
The government, as you know, is actively working to boost women's participation in the workforce, and today's event marks a significant step towards recognizing the importance of quality childcare services. May I request everyone to please be seated. Kindly keep your mobile phones in the silent mode. Under the Palna subcomponent of Mission Shakti, the Ministry of Women and Child Development is expanding the Anganwadi cum Crèche facilities, focusing on providing high-quality childcare support for children aged 6 months to 6 years. And this initiative, along with the introduction of national minimum standards and protocols for creche management, aims to institutionalize care services and promote female labor force participation. So this event promises to be a milestone in shaping the future of women's workforce participation in India, with the release of the National Minimum Standards and Protocol and the collective efforts towards empowering women in the workforce. We'd like to begin our program this afternoon by inviting our honored guest to please light the ceremonial lamp and inaugurate this mission that we are on. May I request the honorable ministers and the secretaries to please. Dr. Munjpara. Thank you very much. We'd like to now formally welcome our guests on the stage. And to do so, may I request the Joint Secretary in the Ministry of Women and Child Development, Dr. Preetham Yashwant, to please present flowers to the Honourable Minister, Srimati Smriti Zubin Irani. The DDG in the Ministry of Labour and Employment, Mr. Amit Nirmal, to please present flowers to Dr. Bhupender Yadav. The Deputy Secretary in the Ministry of Women and Child Development, Mr. Bhaskar, to please welcome Dr. Munjpara Mahendrabhai. Dr. Shikha Anand in the Ministry of Labour and Employment, Director, to please welcome Ms. Aarti Ahuja. And Ms. Arkaja Das, may I request you to please come up and welcome the Secretary, Mr. Indivar Pandey. Thank you very much. We'd like to begin, ladies and gentlemen, by sharing with you a short film. As you know, the government of India has been working for the last 9 years to change the future of women in the country. Nari Shakti has been at the forefront of all its measures. In fact, Prime Minister Modi has been promoting women-led development. So here's a short film that we'd like to share with you. विकसित के निर्माण के लिए भारत की नारी शक्ति का नेतृत्व करना उतना ही आवश्यक है। हमारी सरकार का निरंतर प्रयास है कि माताओं, बहनों, बेटियों के रास्ते में आने वाली
हर रुकावट को दूर करें, उनकी जिंदगी आसान बनाएं। नारी शक्ति की संकल्प शक्ति, इच्छा शक्ति, उनकी कल्पना शक्ति, उनकी निर्णय शक्ति का सामर्थ्य दे रहा है देश को नई दिशा। नारी शक्ति का ये सामर्थ्य है भारत की अनमोल शक्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से नारी शक्ति ने एक नई करवट ली है। अमृत काल में विकसित भारत के निर्माण का संकल्प लेकर देश की नारी शक्ति अब युगों पुरानी परंपरागत छवि से अलग हटकर अपने लिए नई पहचान गढ़ने में जुट गई है। बीते 10 वर्षों में 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने थामा है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का दामन और वैल्यू क्रिएशन में दे रही हैं अपना योगदान। बीते 10 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ने बैंकों से 8.12 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का ऋण लिया है। ये महिलाएं केवल छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं हैं, बल्कि ये ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्संस का काम भी कर रही हैं। बैंक सखी, कृषि सखी, पशु सखी के रूप में ये महिलाएं गांव में विकास के नए आयाम बना रही हैं। गांव हो, कस्बे हों या शहर, सभी कार्य क्षेत्रों में महिला शक्ति की भागीदारी लगातार बढ़ रही है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा जारी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार देश में 2023 में महिला श्रम शक्ति की भागीदारी में बढ़ोतरी 37% की बुलंदी पर पहुंच गई है। देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सभी कार्य क्षेत्रों में देश की नारी शक्ति से ज्यादा भागीदारी आज की आवश्यकता है, क्योंकि सक्षम नारी शक्ति से ही होगा निर्माण विकसित और सशक्त भारत का। May I now invite the Secretary in the Ministry of Labour and Employment, Ms. Aarti Ahuja, to please welcome all our guests and make the opening remarks. Thank you, Irani ji. Namaskar. Today we have gathered here to make a commitment to make our workplaces more inclusive and free from gender bias. On this occasion, I extend a very warm welcome to Honorable Minister for Women and Child Development, Srimati Smriti Zubin Irani, whose idea it was in the first place. Honorable Minister for Labour and Employment, Shri Bhupender Yadav, who supported it wholeheartedly and gave it impetus. Honorable Minister of State WCD, Dr. Munjpara Mahendrabhai, who has supported this fully. Secretary Women and Child Development, representatives of industry and trade unions, all the invited dignitaries, officers, representatives of the media, and all present in this hall. हमारे जैसे डाइवर्स और डायनामिक देश में वर्कफोर्स में जेंडर पैरिटी हासिल करना केवल एक नीतिगत उद्देश्य ही नहीं, बल्कि एक सामाजिक अनिवार्यता है। भारत सरकार ने राष्ट्र निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों के दौरान समुचित कदम उठाए हैं। हमने हाल में ही देखा 26 जनवरी को किस प्रकार नारी शक्ति को एक साक्ष्य रूप दिया गया और हम सब ने बहुत गर्व महसूस किया उसमें। सरकारी पॉलिसीज का प्रभाव इस हॉल में मौजूद लगभग सभी लोग भली भांति जानते हैं। PLFS जैसा आपने फिल्म में भी देखा, उसके अनुसार महिला लेबर फोर्स अब 37% हो गई है। 14% की बढ़ोतरी लगभग पिछले 5 वर्षों में कोविड पैंडेमिक के बावजूद हुई। इससे पता चलता है कि महिलाओं के लिए सरकार द्वारा लागू की गई नीतियां प्रभावशाली रही हैं। उदाहरणतः फॉर्मल सेक्टर में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट में 2017 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार मातृत्व अवकाश 12 से 26 सप्ताह तक बढ़ा दिया गया, नर्सिंग ब्रेक दी गई और कंपल्सरी क्रैश की सुविधाएं प्रदान की गईं।
ESIC ने भी पिछले वर्ष मैटरनिटी बेनिफिट में लगभग 418 करोड़ रुपए महिलाओं को दिए हैं। EPFO में वर्क प्लेसेस में क्रैशेस चलाए जा रहे हैं। इसी प्रकार कॉरपोरेट बोर्ड्स में महिलाओं को लीडरशिप पोजीशंस में रखा गया है और सभी जगह अनिवार्य रूप से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी सेटअप की गई हैं जिससे कि सेफ और इंक्लूसिव वर्क प्लेसेस बने। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में मनरेगा, बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की गाइडलाइंस में विमेन फ्रेंडली वर्क स्पेसेस और क्रैशेस की व्यवस्था की गई है। BOCW गाइडलाइंस में हमने महिलाओं के लिए कॉमन खाना बनाने की सुविधाएं और रहने की सुविधाएं वो भी गाइडलाइंस में डाली हैं ताकि उनकी ड्रजरी कम हो। बहुत सारे कॉरपोरेट भी मैंने देखे हैं, वो महिलाओं को बड़ी संख्या में रोजगार देते हैं और उनके लिए भी बहुत अच्छी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं ताकि वो एक सेफ एनवायरनमेंट में काम कर पाएं। फिर भी और काम अभी बाकी है। यही PLFS हमें बताता है that for women, the primary deterrent to employment when they were asked, for them the deterrent is child care and commitments of homemaking. When the same question is asked to men, they cite that it is their desire to continue their studies. This comparison highlights the gender equality of desires. The desires are so different. But the good news is that we know what needs to be done. हमें करना क्या है? हमें महिलाओं को ये विश्वास देना है कि अगर वो और उनके बच्चे सुरक्षित हैं। जैसा किसी ने कहा था, उसे विश्वास था कि वो कर सकती है, इसीलिए वो कर गई। यही विश्वास हमें दिलाना है। Today, as the 5th largest economy of the world, we are on the cusp of a takeoff. This is the time to do more and to do it better. अब आवश्यकता है कि हम माननीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र से किए गए आह्वान पर फोकस करें और नारी शक्ति में इन्वेस्ट करें, उसे प्रमोट करें। Both our honorable ministers have always led from the front in this respect, और मैं उनके प्रति हृदय से आभार प्रकट करती हूँ for their ideas, support and trust and making today happen. मैं इंडस्ट्री एसोसिएशंस और इंडस्ट्री लीडर्स को उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देती हूँ। हम VC से देश भर के इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव से भी जुड़े हुए हैं जो एक महत्वपूर्ण प्लेज लेंगे। हमें उम्मीद है कि अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे and this will become a good tsunami of good practices. आज EPFO नेटवर्क से महिला कामगारों द्वारा फीडबैक का सिस्टम भी आरंभ होगा और हमें उम्मीद है कि इंडस्ट्री एसोसिएशंस इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग करेंगे और जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें पुरस्कृत भी करेंगे। मैं धन्यवाद देती हूं सेक्रेटरी WCD और उनकी टीम को, विशेषकर उनकी लीडरशिप और कोलैबोरेशन के लिए, और मेरे अन्य कुलीग्स, सेक्रेटरीज, मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन, रोड ट्रांसपोर्ट, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, MSME, जिनका पूर्ण सहयोग इसमें रहा। अंत में मैं इस ऐतिहासिक कार्यक्रम में फिर से आप सबका स्वागत करती हूं and I once again remind you of that very thrilling sight of women daredevils on motorcycles and the women fighter pilots flying above our heads on 26 January. They broke so many stereotypes. Let us no longer exclude 50% of our talent pool. Let them march with the nation in the true sense of the word, shoulder to shoulder. It is needed for our women, it's needed for our men, and it's needed for our country. Thank you and welcome once again. Thank you, ma'am. May I now invite the Secretary, Ministry of Women and Child Development, Mr. Indivar Pandey, sir, to please address the gathering. Shrimati Smriti Zubin Irani ji, Honorable Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Shri Bhupender Yadav ji, Honorable Minister for Labour and Employment, Dr. Munjpara Mahendrabhai ji, Honorable MOS WCT, Shrimati Aarti Ahuja, Secretary, Ministry of Labour and Employment, my colleague officers from states, senior officers of Government of India, and members of industry associations and labour unions. It's a pleasure to be here on this
important occasion where we are talking about Saksham Nari Shashakt Bharat. Our ministry's mandate is to ensure that we create an ecosystem which basically ensure that more and more women can participate in the labor force. I am reminded of a study of World Bank some time back, which mentions that if female labor participation in India goes up to 50%, then by 2047, India's GDP will be 43% more than what it is as per the usual norm, the ongoing rate. So that much of a difference it will make to the GDP if 50% of women are working in the country. Our scheme, Mission Shakti in particular, takes care of many of the aspects which lead to higher rate of participation of women in the workforce. मिशन शक्ति के दो कंपोनेंट्स का मैं पर्टिकुलरली मेंशन करना चाहूँगा, एक तो क्रेशेस और एक वर्किंग वुमेन हॉस्टल। अगर आप देखें तो क्रेशेस की इम्पोर्टेंस दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पहले जैसा कि होता था कि घर में जॉइंट फैमिली होती थी, कोई ना कोई, इफ लेडी इज वर्किंग, शी हैज ए स्मॉल चाइल्ड, देन द कोई ना कोई मदर इन लॉ और समबडी विल बी देयर हु विल टेक केयर ऑफ द चाइल्ड व्हेन शी इज अवे। आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज की वजह से ये समस्या बहुत है और ये समस्या सबके लिए है, हमारे लेवल पे भी है और जो हमारे यहाँ जो सपोर्टिंग हैंड है घर पे उनके लिए भी ये समस्या है। तो इसमें क्रैश का एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है कि जो 0 से 6 साल के बच्चे हैं उनके कैसे एक इफेक्टिव क्रैश सिस्टम उनके लिए प्रोवाइड किया जा सके। और इसके लिए मिनिस्ट्री एक पालना स्कीम भी चलाती है, जिसमें कि अब हम लेटेस्ट जो कर रहे हैं कि आंगनवाड़ीज जो हैं अर्बन एरियाज में आंगनवाड़ीज को आंगनवाड़ी दिस फैसिलिटी विल बी एब्सोल्युटली फ्री। तो ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इसमें। दूसरा एक बहुत ही बड़ा कंपोनेंट है वर्किंग वुमेन हॉस्टल का। नाउ सेफ्टी और सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई लड़की, कोई भी महिला अगर किसी दूसरे शहर में जाके या अपने शहर में ही दूर रह के कहीं पे नौकरी करना चाहे, ऐसे में वहां पे एक प्रॉपर सेफ इकोसिस्टम तैयार करना बहुत जरूरी होता है और उसमें वर्किंग वुमेन हॉस्टल का एक बहुत बड़ा रोल है। इसमें भी हमने देखा है कि पहले एक था कि कहाँ पे जमीन मिल जा रही है उस हिसाब से वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना दिया जाता है, जबकि इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट हैं, एक सेफ्टी इंश्योर करना, दूसरा इफेक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये दो कंपोनेंट अगर नहीं एड्रेस करेंगे हम तो ये स्कीम बहुत अच्छे से नहीं चलेगी और इस दिशा में भी हमने काफी काम किया है। मुझे आज खुशी है ये बताते हुए, इसके बारे में डिटेल में ऑनरेबल मंत्री जी बताएंगे कि हम मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन हैज कम अप विद देयर सपोर्ट एंड जैसे प्रधानमंत्री जी की कन्वर्जेंस की एक भावना रहती है कि हर डिपार्टमेंट एक साथ मिलकर काम करे ताकि देश का समग्र विकास हो। तो उसमें हमने उनसे निवेदन किया है कि आप अपनी यूनिवर्सिटीज में, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, बहुत सारी पुरानी यूनिवर्सिटीज हैं, उसमें काफी लैंड है और वहां पे जो है अगर आप वर्किंग वुमेन हॉस्टल बना दें तो वो काफी अच्छे से यूटिलाइज होगा। यूनिवर्सिटीज हरदम कम्युनिकेशन वाइज भी वेल कनेक्टेड होती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा, हम आशा करते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन का इसमें एक बहुत बड़ा योगदान होगा। उनके नंबर्स आ रहे हैं, कई यूनिवर्सिटीज ने ऑलरेडी हमको लिखा है कि हम इस स्कीम में शामिल होना चाहेंगे। इसमें हमारी जो निर्भया फंड के माध्यम से भी हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल को फंड कर रहे हैं। स्टेट्स को जहां पे रिक्वायरमेंट है वहां भी हमने निर्भया फंड के माध्यम से उनको सपोर्ट दिया है कि हम वर्किंग वुमेन हॉस्टल बनाएंगे। सबसे जो अच्छी चीज है पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर के लिए मैं ये कहूंगा कि आज जो माननीय मंत्री जी के सुझावों से और उनके आइडियाज की वजह से कि कैसे हम प्राइवेट सेक्टर को साथ लेके क्रेशेस का नंबर और बढ़ाएं और उनका एक मेजर सहयोग आए हमारे इस प्रोग्राम में। तो इसके लिए जो आज एक मिनिमम स्टैंडर्ड्स का प्रोटोकॉल हम लोगों ने लेबर के साथ मिलकर और अन्य मिनिस्ट्रीज के साथ बनाया है, तो ये मेरे ख्याल से इंडस्ट्री को भी बहुत यूजफुल होगा। इसके बेसिस पे क्रेशेस को क्रिएट करना, वो इंडिविजुअली सिंगल क्रेश भी क्रिएट कर सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज जो कि आसपास के पड़ोस में है वो भी एक मिल के क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शंस इसकी वजह से खुल जाते हैं, जिससे कि इससे काफी फर्क पड़ेगा क्रेश के नंबर्स में। कंपनीज एक्ट में भी प्रोविजन है सीएसआर की गाइडलाइंस में कि आप जो है इसमें क्रैश क्रिएट कर सकें। स्पेसिफिक क्रैश नहीं था, इनफैक्ट हमने इसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स से बात की है और वो अपने इसमें रूल्स में परिवर्तन कर रहे हैं। बाकी सारी चीजें जो हैं सीएसआर में जेंडर इक्विटी के सारे भी अन्य मेजर्स जो है वो उसमें किए जा सकते हैं। दो और
स्कीम्स मैं अपनी बनाना चाहूँगा, पर्टिकुलरली मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की, कि हमारा ध्येय रहता है कि विमेन को पूरे लाइफ टाइम कॉन्टिन्यूम बेसिस पे जन्म से लेके और मृत्यु तक कहीं ना कहीं पे हम ट्रैक करें और उनको हम क्या सुविधा दे रहे हैं। तो उसमें हमारी जो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना है, जिसमें हम पहले बच्चे के लिए करीब 6,000 रुपए देते हैं और दूसरी बच्चा अगर लड़की हुई तो उस केस में भी 6,000 रुपए देते हैं। ये स्कीम जो है ये बेसिकली मैटरनिटी बेनिफिट के तरह से काम करती है, जबकि वो काम नहीं कर सकती है महिला। तो इसके लिए ज्यादा से ज्यादा इसमें कोई किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, एक्सेप्टिंग पीपल हु पे इनकम टैक्स एंड जो कि सरकारी नौकरी में है, बाकी हर फैमिली इसमें एलिजिबल है। तो हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग इससे जुड़ें ताकि महिलाओं को उस समय पे न्यूट्रिशन और इसका सपोर्ट मिल सके, ताकि वो काम कर सकें इस पीरियड में। और एक हमारी नई स्कीम अभी शुरू हुई है, हर जिले में हम एक हब फॉर एम्पावरमेंट ऑफ विमेन बना रहे हैं, जो कि एक सिंगल पॉइंट होगा जहां से सरकार की सारी स्कीम्स की जो इंफॉर्मेशन है वो महिलाओं को एक जगह से मिल जाएगी। आज तक इस तरह की कोई भी सिस्टम जो है वो नहीं था। इन्हीं सब कुछ शब्दों के साथ मैं फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, और आशा करता हूं कि हमारे जो आज प्रोटोकॉल यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे ऑनरेबल मंत्रियों के द्वारा, वो बहुत ही यूजफुल होंगे प्राइवेट सेक्टर को भी उनका एक जो दायित्व है वो निभाने में। इस बारे में बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. We'd like to now share with you a short film on the Anganwadi cum Crèche under Palna scheme initiative that aims to increase the women workforce participation and contribute to the economy. मिलिए नए भारत की नई नारी शक्ति से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आत्मनिर्भर बनती, राष्ट्र निर्माण में भागीदारी निभाती। जब बेफिक्र होकर भारत की नारी शक्ति रखेगी बाहर कदम, तभी तो मिलाएगी दुनिया के कदम से कदम। खेत से लेकर खेल के मैदान तक, सरपंच से लेकर के संसद तक, स्कूल से लेकर के सेना तक, हमारे देश की महिलाएं आज कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ रही हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय देश भर में 17,000 नए आंगनबाड़ी सह पालना घर खोलने जा रहा है, जिसमें से 5,222 केंद्रों को स्वीकृति दी जा चुकी है, ताकि नए भारत के निर्माण में जुटी हमारी नारी शक्ति अपने बच्चों के लालन पालन और पोषण से बेफिक्र रहें। इन पालना घरों में 6 महीने से लेकर 6 साल तक के बच्चों के केयर की व्यवस्था होगी। कामकाजी महिलाएं यहाँ अपने बच्चों को छोड़कर काम पर जा सकती हैं। सुरक्षित चाइल्ड फ्रेंडली क्षेत्र में पालना घर खोले जाएंगे। ये सेंटर्स बच्चों के घर या माँ के काम करने के स्थान के पास होंगे। महीने में 26 दिन पालना घर खुले रहेंगे। गुणवत्ता बनाए रखने के लिए एक सेंटर पर सिर्फ 25 बच्चे होंगे। जैसा घर में रहन सहन, वैसा ही वातावरण पालना घर में भी होगा। साथ ही पालना घर में 12वीं पास कार्यकर्ता और 10वीं पास सह कार्यकर्ता की ही नियुक्ति की जाएगी और उन्हें ट्रेनिंग NIP CCD के मानकों पर दी जाएगी। पालना घर में पर्याप्त रोशनी और सफाई की व्यवस्था, पीने के लिए स्वच्छ पानी, चाइल्ड फ्रेंडली टॉयलेट, पोषण 2.0 के मानकों पर खान पान की व्यवस्था, बच्चों को 3 बार भोजन पोषण 2.0 के मानकों पर, हेल्थ चेकअप, ग्रोथ मॉनिटरिंग, टीकाकरण, सोने की व्यवस्था, डे केयर, प्री स्कूल शिक्षा जैसी सुविधाओं से पालना घर लैस होगा। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के इस प्रयास से ज्यादा महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार से जुड़ने में आसानी होगी और बच्चों को भी क्वालिटी पालन पोषण और शिक्षा मिलेगी। हमारे आंगनबाड़ी केंद्र दुनिया की सबसे बड़ी चाइल्ड केयर संस्था है और अब ये पालना घर संवारेगा भारत का आने वाला कल और माँ को राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी निभाने का अवसर देगा।
As has been mentioned before, the Government of India is significantly working towards increasing participation of women in the workforce. However, industry also needs to equally support the efforts of the government, and we've brought out an advisory for employers to help them create and foster an environment that encourages the participation of women in the workforce. May I request the Honourable Ministers now to please release this advisory. Urges employers across industry to provide all statutory and general facilities, ensuring the safety, well-being and overall empowerment of female employees. We also have advisory that has been specifically brought out for employers in the construction sector by the Ministry of Housing and Urban Affairs. A key area with immense potential for growth and one that employs a substantial number of women employers. This sector also has an advisory which has been brought out. The Ministry of Road Transport and Highways also has a similar advisory for the employers in that sector. We now have the Employers Rating Survey to help us gauge the progress and efforts of employers based on specific facilities provided by employers for women workers. And I'd like to request the Honourable Minister to press the remote which is in front, and you'll be able to see. This initiative is a step towards accountability and recognition of those who actively contribute to a more inclusive work environment. I'd like to now request the Secretary General FICCI, Mr. Shailesh Pathak, to please help us come up and read the pledge which urges industry to actively work towards increasing female workforce participation. Dhanyawad. Thank you. On behalf of our industry colleagues from FICCI and CII and FICCI Flow, warm namaskar to Honorable Minister Smriti Irani, Honorable Minister Bhupender Yadav, and dignitaries. Prishtabhumi, the background is that women make half the population of our country, and their participation in the workforce is good for all of us in business in terms of increasing our competitive advantage and contributing to society at large. While we in industry are working towards creating an enabling environment for women to enter and succeed in the workplace, there is a need to create greater awareness and accelerate and make this a mass movement. To realize the vision of Viksit Bharat, policies and initiatives that promote equal pay, equal opportunities, training, career advancement, and safety of women at workplace are required. और माननीय मंत्रीगण, 75% of my family is women, तो मेरा इसमें personal vested interest है that women empowerment और बढ़े. Towards this, an industry pledge has been developed to boost economic participation of women by implementing policies and advisories already existing in various laws. This pledge applies to all our members, all employees, potential employees, vendors and contractors across all sectors. आप सभी के पास ये pledge होगी? Yes? I will read the first word, then we'll read the entire pledge together. ठीक है? As an employer,
I pledge to increase women's participation in the workforce and to provide childcare facilities like Crèches. Ensure equal pay for equal work amongst women and men. Let's hear you. Number 3, enable women to balance work and care responsibilities. Number 4, grant maternity leave and other such benefits as per law. Number 5, constitute an internal compliance committee on sexual harassment as mandated by law. Number 6, provide safe workplaces for women. Number 7, communicate all such provisions clearly to all employees. Number 8, invest in career planning and training required for growth of women employees. Number 9, have gender agnostic job descriptions. Number 10, promote women participation in supply chains. And number 11, increase women participation in workforce by 10 percentage points in the next 3 years. On behalf of all of the employers present here, I once again compliment Honorable Ministers for organizing this. Thank you. And Talia. Thank you, Mr. Pathak. I hope that this pledge will be a commitment to creating a more diverse and equitable workforce for the betterment of our country. We'd like to now share a short film on women workforce participation. विकसित भारत के लिए देश की नारी शक्ति, युवा शक्ति, किसान और हर गरीब का विकास होना बहुत जरूरी है। मेरे लिए तो यही 4 जातियां ही सबसे बड़ी जातियां हैं। ये 4 जातियां सशक्त हो गई तो पूरा देश सशक्त हो जाएगा। 2014 से भारत का यही है दृढ़ संकल्प, अर्थव्यवस्था में नारी की भागीदारी हो, नारी से देश का विकास हो। और देखिए, हो भी रहा है। स्टैंड अप इंडिया के 83% उद्यमी कौन? महिलाएं। 55% जन धन खाते किनके? महिलाओं के। 8,12,000 करोड़ रुपए की बैंक क्रेडिट किसके नाम? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के। पीएम आवास के 70% घर किनके नाम है? घर की महिलाओं के। पंचायतों में 46% नेतृत्व है महिलाओं का। आर्म्ड फोर्सेस में 215% बढ़ी है संख्या महिलाओं की। उच्च शिक्षा में पिछले 10 साल में 32% की बढ़ी है संख्या बेटियों की। बेटियों के लिए खुले हैं सैनिक स्कूल के द्वार। एनडीए में पहला विमेन कैडेट बैच ले रहा है आकार। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को मिला है आरक्षण। सेना में महिलाओं का स्थायी हुआ है कमीशन। आज देश में 47% स्टार्टअप्स में कम से कम एक महिला डायरेक्टर है। लेबर कोड्स तक में नई शर्तों को जोड़ा गया है ताकि कंपनियां अधिक महिलाओं को एम्प्लॉय करने के लिए आगे आए। और ये सब किस बात के संकेत हैं? यही कि आजादी के बाद से अब तक जो नहीं हुआ वो पिछले 10 साल में हो पाया है। यही कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की नई सोच से सरकार की हर योजना में महिलाओं को प्राथमिकता मिली है। मिशन शक्ति जैसी पहलों ने महिलाओं की समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया है। मातृत्व से उनके नेतृत्व का सफर कहीं थम न जाए, इसीलिए प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत धनराशि का प्रावधान और कामकाजी महिलाओं की पेड मैटरनिटी लीव 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। 17,000 से ज्यादा पालना घर खोले जा रहे हैं और वर्क फ्रॉम होम जैसी सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। नए भारत की नई विमेन वर्कफोर्स अनस्टॉपेबल है। देश भर में 90 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने हैं, जिससे लगभग 10 करोड़ महिलाएं जुड़ी है। रोजगार और स्वरोजगार से अपने पैरों पर खड़ी है। गांव में 2 करोड़ से ज्यादा बहनों को लखपति बनाने के लिए लखपति दीदी स्कीम शुरू की गई है, जिसके साथ बहनों को LED बल्ब बनाना, प्लम्बिंग जैसे स्किल सिखाए जाएंगे।
कृषि के लिए 15,000 से ज्यादा ड्रोन SHG को उपलब्ध कराया जा रहा है और इन्हें चलाने, ठीक करने की ट्रेनिंग भी महिलाओं को दी जा रही है। तभी तो देखिए, आज देश में वर्किंग विमेन की भागीदारी दर 23% से बढ़कर 37% हो गई है। ये जो 14% का फासला है, यही तो विकसित भारत का रास्ता है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने ये साबित कर दिखाया है कि हमारी माताएं, बहनें, बेटियां परिवार की ही नहीं, विकास के हर क्षेत्र की कप्तान हैं। जय हिंद। During Amrit Kal, which is a crucial period for achieving Atmanirbhar Bharat, the emphasis on women-led development and increased women workforce participation taking center stage now. The National Minimum Standards and Protocol for Crèches Operation and Management play a vital role in establishing high-quality childcare facilities. And I'd like to now request the Honourable Ministers to please release the National Minimum Standards and Protocol for Crèches Operation and Management. These focus strongly on standardizing and institutionalizing the care economy, contributing significantly to the vision of women-led development. Additionally, these standards and protocol align with the broader goal to promote and support the care sector, reinforcing the commitment to a self-reliant and empowered nation. This certainly marks a pivotal step towards empowering women and fostering inclusive growth. Ladies and gentlemen, we'd like to now specially share with all of you a few success stories by inviting industry leaders and members on implementation of the Maternity Benefit Act and the Women Workforce Participation. So some of our guests who will be joining us are going to do so online. I'd like to start with the Chief HR Officer, Hindustan Unilever Limited, a business-focused HR leader, Ms. Anuradha Razdan. Good afternoon, Honourable Ministers and dignitaries on the dais. My name is Anuradha Razdan and I'm the Chief Human Resources Officer for Hindustan Unilever, joining from Mumbai today. At Hindustan Unilever, we have an ambition of being gender balanced from the boardroom to the shop floor, and we aspire to reach 50% gender balanced at our managerial levels by 2025. Today, we sit at 46%. We have been on this journey for the last 10 years, and apart from representation, we focus on policies and infrastructure that support women, but also build balanced households that empower the larger ecosystem. On childcare specifically, we extend daycare, creche and facilities to all our employees across our offices and 20 factory locations. We provide flexible work arrangements for both men and women, keep jobs open for women so that they have a earmarked job to get back to when they return from maternity, and pay for the cost of travel and stay for their child and the child carer if a new mother has to travel for official purposes. In addition, we extend our leave and medical policies that support women and same-sex partners, adoption leave, paternity leave, surrogacy leave, and fertility leave. We also extend financial support for treatments such as IVF and stem cell banking. Our holistic maternity and paternity schemes have empowered women to take critical life decisions at a time they deem fit, and we have supported them through this journey at this vulnerable moment, and we have, in fact, a 97% return rate of women from maternity leave. Finally, for the extended community, we have groomed Poshan Sathis, or nutrition experts, across our network of 150,000 Shakti Ammas, and they impart nutrition education to reduce incidence of anemia, malnutrition, specifically amongst adolescent girls, pregnant and lactating mothers.
Today, we have Poshan Sathis across over 10-12 villages, providing knowledge and education to over 13 lakh women in the country, and will be rolling this out across our network of 150,000 Shakti Ammas. Thank you, and look forward to taking this journey forward. Thank you very much, Ms. Razdan. We now move to Ms. Munira Dabhia, who leads Diversity, Equity and Inclusion at Aditya Birla Capital, a move she made after 15 years of experience in human resources. Hi, good afternoon, everyone. When it comes to care, we have about creche facilities. We provide creche reimbursement to our women employees who have children up to from 6 months to 6 years. It's 10,000 rupees per month is given on creche reimbursement. We also have creche tie-ups in case they want to use our in-house creche tie-ups. We also provide nanny allowance of about 8,000, again to women from 6 months to 6 years. Our travel policy also comprises of, a woman can take her child and her nanny for any business travel, international or domestic, up to 2 years of age of the child. From society perspective and CSR perspective, we have refurbished about 200 Anganwadis along with Government of India as per the norms of government in aspirational districts, including refurbishment, state-of-the-art, professional setup, all of that. We also, in certain segmented geographies, we provide prenatal, postnatal, and even east pregnancy support. We also have radio medical vans. We do child immunization. In fact, to tell you, at Aditya Birla group level, the CSR is huge. Our philanthropic efforts have been started even pre-independence era, and it goes beyond health, education, sustainable livelihoods, infrastructure, model villages. In particular, from care, our mother and child healthcare projects serves around 100,000 women and children every year. For our employees, apart from creche and nanny, our expecting mothers, we provide local convenience support from the day they apply for maternity leave. 1,000 rupees per day is given to them. We have additional maternity leave up to 60 days. If a woman needs more leave, we have extended maternity, post-additional maternity. We also provide transition guides, career support. We have flexible working policy for a child up to 2 years. You can use remote areas, satellite offices, hybrid offices, part-time, part-pay. We also have a mom's cafe, which is all our mothers and to-be mothers and new mothers come together. They share their experience, their support, and they help each other. In addition, we also have different leave, paternity leave, childcare leave, miscarriage leave, adoption leave, and of course, we provide medical support as well. Thank you so much. Thank you, Munira. I'd like to now invite Ms. Neetu Bhushan, Chief HR Officer at Pernod Ricard, with over 18 years of experience in HR. She has worked across sectors, managing different capacities and roles. Neetu Bhushan. Is she available? Neetu Bhushan? Console, is she available? Should I move to the next person and we can come back to Neetu? Ms. Ankita Banerjee, Vice President, ED&I Center of Excellence, Asia Pacific at Randstad, India. With over 10 years of experience in HR, Ankita is passionate and skilled in the field and has successfully implemented innovative and impactful initiatives. Ankita Banerjee. Good afternoon to the Honorable Ministers, dignitaries, and all the participants here today. My name is Ankita Banerjee, and I am the Vice President of the ED&I COE for the Asia Pacific region for Randstad, one of the world's leading talent companies. I'm joining in from Bengaluru, Karnataka this afternoon.
As Randstad India, we are proud members of FICCI and recognize our role as a thought leader and an influencer for promoting gender equity and women empowerment. In Randstad India, we are proud to be recognized among India's top 50 workplaces by an independent external survey. We are guided by a philosophy of flexibility with intentionality. Through our employee resource groups for women and caregivers, we drive several initiatives and programs to drive gender equity. In addition to the maternity leaves policy, new mothers are able to extend their leaves for up to 4 months as necessary and also benefit from our flexible work schedules. Recognizing the importance of caregiving, new fathers also benefit from 12 weeks of paid paternity leave, and this is extended for non-traditional family structures, including adoption, surrogacy, and other situations. We have a great case study of a colleague who opted for flexible work arrangements as a new mother and till date continues to outperform on her goals and get recognition and awards for her work. Through our mental health benefits program, we host conversations around caregiving, motherhood, and other related topics to promote a safe space for bold dialogues and decisions to take place. In the past, we have also run campaigns to hire and develop women returning to work after a break and have had many success stories from this. Through our social impact initiatives, we make sure to work with underrepresented groups, including women in STEM, from an economically disadvantaged background through upskilling and work readiness programs like mock interviews, CV preparation, and industry insights. Over time, we will ensure that our gender equity goals of 50% women representation in leadership roles are met, and we have already significantly reduced the gender pay gap across all levels in the company. With this, we reaffirm our commitment to becoming the world's most equitable and specialized talent company, building a gender-equal world, nation, and society. Thank you so much. Thank you very much, Ms. Banerjee. Is Neetu available, or should I move to the next person? All right, so we move to Mr. P. Padma Kumar, Executive Director, HR and Head CSR at Saint-Gobain. A member of the top management at Saint-Gobain, providing leadership to HR. May I request Mr. Padma Kumar to please share his thoughts. Good afternoon. Thank you, Rini. Honorable ministers, dignitaries on the dais, colleagues from the industry. I'm joining from CII Chennai. At Saint-Gobain, diversity is not just a desire, but a commitment. Our business leaders lead from the front in championing our Saint-Gobain purpose of making the world a better home. Towards this, we deploy measures to attract and develop gender-diverse workforce by building an inclusive culture that empowers women and create role models for the future. The mirror which you look at every day morning is manufactured by Hunter if it is from Saint-Gobain. Our forklifts are being operated by women in our shop floor. Sensitization workshops across our organization pyramid gives confidence to us to aim at 25% gender diversity by 2026. We focus on best-in-class infrastructure, be it our crèche, our washrooms, our wellness centers in the shop floor, transport, and assisted by professional agency to manage them to benefit our employees and our extended manufacturing ecosystem. In our commitment to gender diversity and workforce participation, we focus on different stakeholders. One, encouraging girl students to opt for manufacturing-oriented programs by supporting them with scholarships at IIIT-DM Chennai. Internships and workplace learning at our premises for engineering and diploma students in their final year to familiarize with the workplace. Mentoring first-time learners from rural upbringing through programs called Tulir and Saki. Flexible working for women, support them and their family during maternity. No questions asked leave, additional leave to support women to take care of their monthly requirements. Extended maternity leave, paternity leaves, Spark, a program to support parenthood and re-establishing career post-maternity for women employees.
2-level higher eligibility in case women have to undergo official travel. Exclusive forums for women to share their life experiences to benefit their colleagues, to benefit other colleagues like the Women in Network. Trellis, an initiative to mentor our women leaders to be successful in the next level and leadership roles. Our society around us has always been close to our heart. We believe an important stakeholder for gender diversity is Anganwadis and our Anganwadi teachers and supervisors. We work towards developing them in 5 states through programs, namely Rakshan, awareness on women and child-related programs, including women welfare, child abuse. Project 2-3, an initiative where our employees volunteer to impart intentionality training for over 500 girl children in the neighboring government schools. Diversity and participation of women in workforce is a journey, and we are committed to our purpose of making the world a better home. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Padma Kumar. We've got the Assistant General Manager, Tata Chemicals, in the hall with us, Mr. Manoj Nair, and I'd request him. He has over 17 years of experience handling the entire gamut of HR, ER, and administrative functions. Mr. Nair. Thank you. Under CARE, we run a SKIP program, which is for women employees, those who have taken career breaks and they want to continue. So Tata Chemicals offer a SKIP program in which they can come to mainstream. We do run crush facilities for women employees. Under the umbrella of We Care, we run a program called Your Dost, which helps and support by professional counselors who provide support to the women employees for their mental wellness. Enhanced maternal care assistant policy is over and above the maternity benefits which the statutory companies follow. That over and above us, we provide a 38 weeks additional benefit to all women employees, in which they can opt for pre or post maternity assessments, in which they can get all the benefits related to fertility treatment, child care, or women self-health care. So these are the benefits which the company provide. Apart from that, we also have CSR activity for which the CSR wing work with the healthcare facility of villages, especially for child and women, and wherever the pregnancy cases are being identified, the nutritional food kits are being provided by the CSR team. We do have scholarship which we provide for the girl child from schooling to the PG level. Thank you very much from Tata Chemicals. Thank you very much, Mr. Nair. I'd like to now invite Neetu Bhushan, Chief HR Officer at Pernod Ricard, who we were trying to get online. So Neetu is here with us. I'm really hoping that this is going to work. Can you hear me? Yes, we can. Of all the days today for Murphy to strike. Thank you so much for having me here. A very good afternoon to all the dignitaries, honorable ministers on stage. It's my tremendous privilege here to be representing Pernod Ricard India. I'm a proud member of the Diversity and Inclusion Task Force that Vicky set up in 2018. I'm based in Mumbai. At Pernod Ricard, we have a very simple philosophy for why diversity and inclusion is important to us. Women are 49% of the population. Our hope and dream is in our lifetimes, we will see that represented in the industry as well. Therein lies our business case, as simple as that. And ownership starts from the leadership team. I'm very proud of the fact that in the last 3 years, we've improved the representation of women in our company by over 50%. Women are 40% of the CXO suite at PRI. As far as maternity benefits are concerned, in addition to everything that the law stipulates, we absolutely open up our own actuals unlimited wellness leave to women.
We take care of all the expenses on the treatment, pre-conception, during, and your postnatal care. We've also looked at enhancing our insurance coverage to include therapy, because in this day and age, along with the nuclear family, postpartum depression is a very big reality that we live with. So to include therapy, not just in OPDs of hospitals, but with counselors of their choice, that's something that we've added. With the CSR team, the Pernod Ricard India Foundation, we're very proud of the work that we do in the women's health and sanitation space, especially working with ASHA workers. Through our medical vans, we use the hub and spoke model to touch as many lives as we can, working with women across the maternity cycle, whether it's nutrition, it's supplements, pre and postnatal care, working with young girls, educating them on menstrual hygiene. One very interesting pilot we've just started is in Rajasthan, near our Behror plant, where we're working with 500 young adult little boys, training them, educating them about menstruation. We believe the sensitization and education needs to start from there, and not just for women, but pretty much all across. In closing, if you'll allow me to say this, giving birth and bringing a child into the world is a tough job. Being a mother is tough. If it was easier, the fathers would do it. So this is an association we're very proud of. Thank you for having me. Thank you very much, Neetu. We'd like to also thank all the industry leaders who've shared their best practices and addressed the care burden, specifically to Anuradha, to Munira, Ankita, Neetu, Mr. Padma Kumar, and of course, Manoj Nair, who's here. Thank you very much. I'd like to now please request the Honourable Minister for Labour and Employment and Environment, Forest and Climate Change, Shri Bhupender Yadav, to please give the keynote address. आज के इस कॉन्फ्रेंस में जिनके इनिशिएटिव से ये कॉन्फ्रेंस होने जा रही हैं, सम्माननीय स्मृति ईरानी जी, भारत सरकार के राज्य मंत्री डॉक्टर महेंद्रभाई, श्रम मंत्रालय की सचिव श्रीमती आरती आहूजा जी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सचिव श्री इंदिवर पांडे जी, और यहाँ पर उपस्थित बड़ी संख्या में सभी प्रबुद्धगण और इस वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से जुड़े हुए इंडस्ट्री के सभी अधिकारीगण, जो इस कॉन्फ्रेंस का थीम है सक्षम नारी सशक्त भारत, आज जिस विकसित भारत की बात हम कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विकसित भारत को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसमें वुमेन वर्कफोर्स का भागीदारी तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन केवल भागीदारी से काम नहीं चलना है, सम्मानजनक भागीदारी होनी चाहिए, गरिमापूर्ण भागीदारी होनी चाहिए, बराबरी की भागीदारी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, उस भागीदारी के माध्यम से वुमेन को जब वो काम करके अपने घर लौटे तो एक स्वाभिमान का एहसास होना चाहिए। और इसलिए श्रम मंत्रालय ने, जब महिला बाल विकास मंत्रालय ने जो पहल करी, हमारी सचिव महोदया जब गई तो हमने इसका तहे दिल से स्वागत किया, और इसके स्वागत करने के साथ आज जो वुमेन वर्कफोर्स है उसके लिए क्या गाइडलाइन होनी चाहिए, मंत्रालय के अधिकारियों ने वो गाइडलाइन निकाली है। मेरा ये मानना है कि जितना महिलाओं को जमीनी स्तर का काम करना पड़ता है, उनकी परिस्थितियां भी उतनी ही कठिन होती हैं, उनका काम भी उतना ही कठिन होता है और उनका रिस्क भी उतना ही कठिन होता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि श्रम मंत्रालय ने पिछले 2 साल पहले
ईएसआईसी के सहयोग से, हालांकि ईएसआईसी का कार्य हमारा केवल ऑर्गेनाइज सेक्टर के वर्कर्स के लिए होता है, लेकिन 2 साल पहले हम लोगों ने 6 महीने के लिए एक प्रोग्राम हाथ में लिया था कि भट्टा क्षेत्रों में जो काम करने वाली महिलाएं हैं और बीड़ी काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका हीमोग्लोबिन, उनके मेडिकल पैरामीटर चेक किए जाए। और 6 महीने के इस कार्यक्रम में हमने उनको सुविधा प्रोवाइड करी थी। उससे मेरे को ये ध्यान में आया कि केवल सुविधा बात नहीं है, वहां पर सबसे बड़ी बात उनके वेजेस का विषय, वेजेस भी सम्मानपूर्वक तरीके से विषय, और उसमें सामाजिक और आर्थिक रूप से एक पूरी सुरक्षा का विषय उनके साथ आना चाहिए। कुछ दिनों पहले जो गन्ना के खेतों में जो महिलाएं काम करती हैं, उनका विषय भी मैं हमारी सेक्रेटरी मैडम के ध्यान में लेके आया था। और इसलिए जो गाइडलाइन हम लोगों ने इशू करी है, विशेष रूप से ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करने के लिए, लेकिन इसका विस्तार किया जाना जरूरी है, और जो महिला बाल विकास मंत्रालय की मंशा भी है। और इसलिए गाइडलाइन में सबसे पहले उनके स्वास्थ्य का प्रावधान, उसके बाद उनकी सुरक्षा का प्रावधान, उसके बाद उनकी सामाजिक सुरक्षा का प्रावधान, उसके बाद उनके जो वेतन में असमानता रहती है, और जो नया मिनिमम वेजेस एक्ट हम लोग लेकर के आए हैं, उसमें हमने कानूनी रूप से अनिवार्य किया है कि समान काम के लिए महिला और पुरुष को समान वेतन मिलना चाहिए। जब स्वास्थ्य, सुरक्षा, सोशल सिक्योरिटी, सामाजिक सुरक्षा, वेतन पेमेंट से संबंधित बात है, तो अगला विषय फिर इंडस्ट्रियल रिलेशन। अभी तो एचआर में काफी सारी महिलाएं यहाँ पर विषय रख रही थी, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन में भी लंबे समय तक लेबर डिस्प्यूट्स को एज ए लेबर लॉयर के नाते मैंने लड़ा है। मुझे पता है कि जितनी भी महिलाएं गारमेंट्स के सेक्टर में काम करती हैं, वहां पर उनका जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है, और इंडस्ट्रियल रिलेशन को जो मेंटेन करने के लिए है, वहां पे रूल्स रेगुलेशन होना जरूरी है। फिर उससे जो बड़ा विषय है वो उनका कार्य, वर्क आवर जो है, वर्क आवर के बाद उनको प्रॉपर जिस क्षेत्र में वो काम कर रही हैं वहां पर उनको इंक्रीमेंट रहना चाहिए। और फिर जो नए लेबर कोड आए हैं उसके संबंध में एक जागरण का काम भी होना चाहिए। इस गाइडलाइन को बनाते समय जो विशेष सेक्टर है, विशेष रूप से जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है, जिन सेक्टर में माइग्रेशन बहुत ज्यादा होता है, हम जानते हैं कि भट्टा सेक्टर में जो नीचे के क्षेत्रों में काम करती हैं महिलाएं, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से चलती हैं, फिर वो एक समय विशेष में जाते हैं। उन सारे क्षेत्रों को विशेष रूप से संभालने के लिए ये गाइडलाइन आज इश्यू की गई है। उसके साथ ही साथ महिला बाल विकास मंत्रालय ने क्रैच के लिए भी जो गाइडलाइन जारी करी है वो भी काफी स्वागत योग्य है। लेकिन जो सबसे बड़ा विषय है, प्रधानमंत्री जी के लगातार प्रयासों के कारण, विभिन्न मंत्रालयों का एक होल ऑफ द गवर्नमेंट अप्रोच लिया है, उस कारण देश में जो कार्यक्षमताएं बढ़ी है, उस कारण मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे यहाँ पर जो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट है वो 22-23 में 37% बढ़ा है, जो 2017-18 के मुकाबले में 13% ज्यादा वुमेन वर्कफोर्स की वृद्धि हुई है। ये देश के लिए एक सुखद संयोग है। उसके साथ ही साथ जो हमारा पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे होता है उसमें वुमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट भी जो है वो बढ़ा है। हमारे यहाँ पर जो स्ट्रक्चरल इम्प्रूवमेंट है हायर एजुकेशन सेक्टर में, वुमेन्स का जो एनरोलमेंट कराना है पीएचडी से लेके एमफिल वगैरह में, उसमें अगर 2014-15 के मुकाबले में देखा जाए तो पिछले 10 सालों में 32% की वृद्धि हुई है।
फिर सबसे बड़ी बात है कि देश की बड़ी आबादी जो रूरल सेक्टर में रहती है, हमारा रूरल अर्बन जो फीमेल लेबर फोर्स है, उसमें भी अगर हम देखेंगे कि हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र है, सरकार के द्वारा मनरेगा से लेकर विभिन्न जो योजनाएं चलाई गई हैं, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं के रोजगार के अवसर बढ़े हैं। और ये ट्रेंड इस बात को दर्शाता है कि सबसे ज्यादा जो महिलाएं हैं वो हमारे, उनका ऑक्यूपेशन जो है स्किल्ड एग्रीकल्चर सेक्टर है, फॉरेस्ट्री और फिशरी सेक्टर है, उसके बाद क्राफ्ट रिलेटेड ट्रेडिंग वर्क्स हैं, और अभी भी 6% महिलाएं ही प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में। तो हमारे सामने जो सबसे बड़ा विषय है, जब हम विकसित भारत में महिलाओं को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रोफेशनल ऑक्यूपेशन में बढ़ाने की बात है। लेकिन हमारे यहाँ पे सीपीएफसी की चेयरमैन बैठी हैं और मेरे को बताते हुए खुशी है कि हमारे जो प्रोविडेंट फंड है, जिसमें केवल स्ट्रक्चरल सेक्टर में महिलाओं का फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट में रजिस्ट्रेशन होता है, वो पिछले 2022-23 में 28 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन हुआ, जो अब तक सबसे ज्यादा है। ये देश में एक सबसे बड़ी बात है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हम लोगों ने 29 करोड़ ई श्रम में लोगों का रजिस्ट्रेशन किया, और मुझे बताते हुए खुशी है कि ई श्रम पोर्टल पे 53% महिलाओं का रजिस्ट्रेशन है। लेकिन पिछले 9 सालों में सरकार ने नए कदम उठाए हैं। सबसे पहले हमने इक्वल पेमेंट के लिए और वुमेन्स के इंडस्ट्रियल रिलेशन से लेकर सारे विषयों को बढ़ाने के लिए लेबर कोड को इंट्रोड्यूस किया। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इक्वल अपॉर्चुनिटी के लिए हमने महिलाओं की मैटरनिटी लीव को तो बढ़ाया ही है, उसके अलावा भी उनके वर्किंग आवर, नाइट शिफ्ट जैसे विषयों पे आगे बढ़ाने का काम किया है। महिलाओं को वेतन के क्षेत्र में काम मिले, उसके लिए आगे कदम उठाए गए हैं। सरकारी क्षेत्र में, क्योंकि महिलाओं का एक बहुत बड़ा कार्यबल सरकारी क्षेत्र रहता है, वहां पर चाइल्ड केयर लीव को बढ़ाने के लिए, जो वुमेन डिसेबिलिटी के कारण जिनको डिसेबिलिटी का विषय है, उनको एक स्पेशल अलाउंस फॉर वुमेन विद डिसेबिलिटी प्रोवाइड किया है। कार्यस्थलों पे जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है, वो महिलाओं को सम्मान पूर्वक कार्य करने का है, गरिमापूर्ण कार्य करने का। उनके ऊपर किसी प्रकार का दबाव नहीं आना चाहिए, और इसलिए सेक्सुअल हरेसमेंट को लेकर के कमेटियों का गठन किया, और सरकार इसमें पूरी तरह सजग है। और ये एक ऐसा विषय है जिसमें प्राइवेट सेक्टर से लेकर सब सेक्टर्स में एक एटमॉस्फेयर और वातावरण का निर्माण किया जाना चाहिए। स्किल इंडिया मिशन और बाकी जगहों पे कार्य हम लोग कर ही रहे हैं। महिला क्षेत्र में जो महिला बाल विकास मंत्रालय के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, उनका मैं उल्लेख नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि स्मृति जी को भी सुनना चाहेंगे। उनके काफी व्यापक अनुभव है और बड़ी सजगता के साथ वो इस क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। मैं उनको बधाई देना चाहूंगा कि आज उनके इस पहल से इस देश में एक नया वातावरण मैं आज देख रहा हूं। वो वातावरण है इंडस्ट्री के द्वारा आगे आकर के प्लेज करने का। हम ये मान के चलें कि अगर जो एम्प्लॉयर अगर आगे आकर के प्लेज करेंगे, उससे देश में एक बहुत नया वातावरण होगा। आज ग्रामीण क्षेत्र से लेकर के जो सामान्य शहरों की लड़कियां आगे बढ़ना चाहती हैं, लेकिन जितना आगे बढ़ना चाहती है उतना ही उनको ज्यादा से ज्यादा सुरक्षित माहौल मिले, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और ये प्रधानमंत्री जी का विजन है। विकसित भारत की संकल्पना में नारी शक्ति तो आगे बढ़े ही, लेकिन उनके लिए अच्छा वातावरण भी तैयार हो। और कई बार हम लोग ये सोचते भी हैं कि जैसे क्रैच खोलना है तो उसमें केवल महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। क्रैच में अगर महिला और पुरुष दोनों बारी बारी से आके बच्चे को लेके जाते हैं तो बेस्ट कपल का भी पुरस्कार दिया जाना चाहिए, ताकि केवल महिलाओं की जिम्मेदारी ना हो, ये सबकी जिम्मेदारी है। दोनों काम कर रहे हैं तो दोनों जिम्मेदारी है। न्यूक्लियस फैमिली है। फैमिली का, परिवार का अर्थ क्या है? परिवार का अर्थ है एक दूसरे की जिम्मेदारी को संभालना। पहले परिवार में कोई देखता नहीं था कि किसके बच्चे को कौन संभाल रहा है। संयुक्त परिवार में सब आपस में संभाल लेते थे। तो
महिला के विकास की जिम्मेदारी और महिला की सोच की जिम्मेदारी और महिला के द्वारा बालक के लालन पालन की जिम्मेदारी ये केवल महिला की ना हो, जब सबकी मिलके होगी, दोनों की मिलके होगी, समाज की मिलके होगी, तो विकसित भारत की संकल्पना को हम ज्यादा अच्छे तरीके से करेंगे। केवल संख्या में नहीं करेंगे, क्वालिटी में भी करेंगे, और यही माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Honourable Minister, sir. I'd like to now invite the Honourable Minister for Women and Child Development and Minority Affairs, Srimati Smriti Zubin Irani, to please address the gathering. मंच पर विराजमान आदरणीय भूपेंद्र यादव जी, महेंद्रभाई, मंचस्थ सचिव महिला एवं बाल विकास इंदिवर पांडे जी, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट आरती जी, लेडीज एंड जेंटलमैन, आज का ये कार्यक्रम कुछ लोगों के दृष्टिकोण से एक सहज कार्यक्रम हो सकता है, बट व्हेन आई सी इंडस्ट्री लीडर्स resolve to provide equity and equality at the workplace, what should not be discounted is the mini revolution which is underway right in this hallowed hall. At the onset, I would like to congratulate both the secretaries, Aarti ji and Mr. Pandey. It took one discussion to start up a fire that has now engulfed in its wake not only two ministries, but now has also included ministries such as education, ministries such as urban development and road transport, and nation building with it. While Mr. Pathak, as usual in his erudite avatar, took a pledge on behalf of the industry, I am today grateful, and I think my fellow ministers will join me in my gratitude, that over 1,000 employers across the country today took that pledge that Mr. Pathak articulated on behalf of FICCI and CII on this dais. What is interesting is, as I speak, 110,000 people have joined us through webcast, which means that जो संकल्प आज यहाँ पर इंडस्ट्री के माध्यम से लिया गया, वो संकल्प निम्न अक्षर अथवा निम्न व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, एक राष्ट्रीय स्वरूप लेकर वो उभर रहा है। आप सबकी नजर उस प्लेज पर थी जो पाठक साहब ने इस मंच पर ली, लेकिन गौरतलब है कि एक एडवाइजरी जो सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, हाईवे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पूरे देश में दी, उसमें कुछ विषय यहाँ पर जो प्रेषित किए गए हैं लेकिन चर्चा में नहीं आए हैं, वो आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहूंगी। इस एडवाइजरी में ये उल्लेखित है, और इसके लिए भूपेंद्र जी आपका और आपके मंत्रालय के नेतृत्व का मैं विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि सचिव आहूजा जी के सौजन्य से आज एक लिखित फरमान जारी हुआ है कि हर एम्प्लॉयर को जो महिला कर्मी है कंस्ट्रक्शन साइट पर, उसका जितना भी मानदेय है, वेज है, उसे ऑनलाइन उसके बैंक के खाते में ट्रांसफर करना है। वर्षों तक हमने ये कहानियां सुनी, देखी, परखी, जहां पर दिन भर की मेहनत के बाद विशेषतः अगर महिला श्रमिक अपनी आय को लेने के लिए किसी कागज के दस्तावेज पर अपना सिग्नेचर देती या फिर अंगूठा लगाती, तो सुपरवाइजर महोदय कुछ इंस्टेंसेस में उसका आधा वेतन शायद ले जाते। जिस डिजिटल डेमोक्रेसी का आज हम बहुत ही प्राउड हिस्सा हैं, उसमें ये कहना उचित होगा कि प्रधानमंत्री जी के सानिध्य में आज देश भर में 24 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के बैंक के खाते खुले हैं, और इसका सबसे बड़ा जो एक बेनिफिट है वो ये कि महिला चाहे किसी भी क्षेत्र में आज कामकाज से जुड़ी हो,
अगर वो अपने अधिकार का पैसा चाहती है तो उसे ऑनलाइन ट्रांसफर की व्यवस्था हो सकती है. Aarti ji, that you have now mandated it through Secretary Note is nothing less than a revolution. What also is possibly not a part of conversations today, for it may not make for delightful read, but the fact that under the advisory that has been pronounced on this dignified dais today, migrant women workers need to be given facility has also been made mandatory as per the advisory given. मुझे ये कहते हुए खुशी है कि देश भर में जो 14 लाख आंगनवाड़ी हैं, 1970 के दशक का ये प्रयास था, लेकिन इस प्रयास में डिजिटल प्राण फूंके प्रधानमंत्री मोदी ने पोषण अभियान के अंतर्गत साल 2018 से लेकर अब तक हर आंगनवाड़ी को डिजिटली सशक्त किया गया है. पोषण ट्रैकर के माध्यम से आज देश भर में 10 करोड़ से ज्यादा लाभार्थी आंगनवाड़ी से जुड़े हैं और उसमें विशेष हमने व्यवस्था की माइग्रेंट विमेन के लिए, ताकि अगर वो अपना गांव छोड़कर शहर की ओर जाएं अथवा एक शहर छोड़कर दूसरे शहर जाएं, their rights travel with them. Over 110,000 women who have migrated have availed of this facility, and hence my compliment, Bhupender ji, to you and your team, that in association with Secretary Mott, for all construction worker women today who are migrant women workforce, you have provided equal opportunity to avail of facilities. आज इस मंच पर हमने डिजिटली कई इंडस्ट्री लीडर्स को सुना organized segment में, or what we call as the upper echelons of industry, who speak of providing pre and post maternity benefits, including therapy, support for surrogacy, support for IVF, support for post the birth of a child, for travel up to 2 years. But can you imagine, under the aegis of the Prime Minister's leadership today, the advisory that I hold in my hand for female construction workers across the country, they are now mandated to be given, the registered construction workers, 26 weeks of maternity leave by their employers. Now that is nothing less than revolutionary, to not only put ink to paper, but also to ensure that officers will look at the availability of such facility to women. Now that the advisory is given, it becomes easy for officers and ministries to compute the impact of such advisories for female construction workforce across the country. That apart from childbirth, if a woman who is a part of the construction industry, constructing highways of our country today, miscarries, according to this advisory, she will be entitled to leave with wages at the rate of maternity benefits for the period of 6 weeks immediately following the date of her miscarriage. We could never imagine that we would come to such a pass in our nation's economic history, where organized industry can stand shoulder to shoulder with those employers who envelop in their wake women who are a part of an unorganized setup and give them equal rights. And that is what today's program is all about. My compliments again to Secretary and Minister Labour. As Pathak ji, you had read out the Internal Complaints Committee. What is fascinating is that the same finds a mention for the highway segment and construction workers and women in the unorganized migrant setup as well. Bhupender ji has spoken eloquently about much that has been done by the government to enhance the participation of women in the labour workforce participation rate. Today, Secretary Pandey has pronounced the Palna scheme, which the ministry had undertaken as a part of the effort of the Prime Minister to ensure that any impediment to the working capacity of women, to the aspirations of women, can be met with a solution with alacrity by the Government of India.
I am proud that out of the 17,000 crèches in Anganwadis that we are to pronounce in collaboration with all state governments, 5,500 such crèches have already been processed by the government of India. I am hopeful today that the industry also takes into its consideration the national standards that we have set up for building and maintenance and operationalization of crèches across the country. If the industry takes these standardized practices and makes it a part of not only the Tier 1 cities, but especially the emerging work capacities in Tier 2, Tier 3 cities, I think that the implementation of that national framework will meet with speed and scale. आज पांडे जी ने अपने उद्बोधन में इस बात का उल्लेख किया कि 2 मंत्रालयों के समन्वय का प्रभाव इतना कि 4-5 और मंत्रालय भी इस विषय में अपने आप को जोड़ पाए हैं। उनमें से एक है शिक्षा मंत्रालय। हमारे दोनों मंत्रालयों का ये प्रस्ताव था कि आज जब आप देखते हैं कि भारतीय शिक्षा प्रणाली में 32% वृद्धि महिलाओं की हुई है, उसके साथ ही साथ when there is ease of living and mobility, you see the number of women pursuing higher education going up. So while in one of the films you may have seen 32% increase in the number of women who now participate in higher education and various academic streams, what possibly has not been mentioned is the number of women now who do PhD in our country has gone up by 99%. This was made possible because credits became mobile in our academic structures. That the new education policy not only provides opportunity for not only men, women and children to learn in their mother tongue, but at the same time provide a framework for mobility of credits. The impact of it on higher education for women now is noteworthy. And that is why we had proposed in a combine between Ministry of Labour and Ministry of Women and Child Development to our counterparts in Ministry of Education, that our main center of learnings, that being our central universities, can get additional support from ministries such as us, so that they can now build hostels only for working women within the university environment. Those women who are pursuing higher studies, however working and gainfully employed by industry, need to find a cost-effective way of pursuing both academics and employment. I'm happy to share, ladies and gentlemen, that 7 central universities have submitted their proposals in writing, and I'm hopeful that in the next 2 weeks, this number doubles, and it will be 100% infrastructurally provided for between the Ministry of WCD with some possible help from our friends in state governments. Today, we are happy to share with you that apart from the advisories, apart from the collaboration between our 2 ministries that we have undertaken, the one area of rising interest for me as a working woman is this. There are many emerging industries which have potential to employ a diverse set of women. Women who not only complement the administrative force of an industry, but women that can also become the STEM foundation of industry. For instance, the EV industry has sold close to 1.5 million electronic-based vehicles in our country in the past year, 2023. The female workforce in the EV industry is 30%. However, we are poised to increase that availability of women employed only in the EV industry if we have more and more women who come into segments of design of vehicles, into battery recharge, into ancillary industry. I'm hopeful that the next step and the next time we meet under the leadership of Shri Bhupender Yadav is when we earmark the emerging technology-based industry and the opportunities for women to be employed and become employers in such industries. I'm hopeful, as one of our participants online, Neetu, said, that if childbirth was easy, men would do it. Well, I will just add a little bit to it. If childbirth was easy, God would want men to do it.
since he's left all the difficult work to us, I'm sure between men and women, as Bhupender ji says, let it not only be the responsibility of women, but between men and women, we need to come together and now not miss the opportunity that has been missed thus far. My compliments to all the employers who have not only taken the pledge, but particularly those employers who will now be adjudged on the EPFO platform. This is not an easy survey to be a part of. That the survey is now going to be not only tabulated, but also courtesy EPFO be housed in the Ministry of Labour and Employment brings me much joy, because now data and feedback from female employees will be robust. But as Mr. Pathak from FICCI and my friends at CII know, I never leave them without an opportunity to contribute. If you'd like to take the template of the survey from the Ministry of Labour and Employment and only deploy it to all your members across the country, I think that the data, which thus far has been a bit rhetorical and a bit fact-based, can be more and more evidenced with science. Given the nod, Secretary Ahuja, that Mr. Pathak is giving me, I think on behalf of FICCI and CII, it's a given that FICCI and CII will deploy this survey amongst all its members. Mr. Pathak may have the privilege of announcing it. So that's another takeaway from today's program. Looking forward to participating and partnering with you as industry leaders between the government and the industry. We walk the path of equity and equality and fulfill our national obligation and aspiration that the Prime Minister has rightly adjudged, Viksit Bharat. Yet again, my compliments to both the Secretary, my gratitude to Shri Bhupender Yadav for the grace that he has shown to allow us to experiment and bring together so many facets of government and industry together. I join Mahendrabhai in expressing our gratitude and delight at the program today. Thank you so much. Jai Hind. Thank you, Madam Minister. In conclusion, may I call upon the Additional Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shri Ramesh Krishnamurthy, to please propose the vote of thanks. Namaskar. It is with immense gratitude that I extend my heartfelt thanks to each one of you who has contributed to the success of today's event, which is focused on the crucial theme of women in workforce for Viksit Bharat. I, on behalf of everyone, would express sincere thanks to our esteemed guests of honor, Srimati Smriti Narayani ji, Honorable Minister of Women and Child Development, Shri Bhupender Yadav ji, Honorable Minister of Labour and Employment. Thank you, Madam, and thank you, Sir, for taking time out of your extremely busy schedule. Your presence has not only added prestige to this event, but conveyed a very strong message about the commitment of the government to empowering women in the workforce. May I request all participants to just sit for another 1 minute, please, while we conclude the program. Please be seated. A special note of thanks to Honorable Minister of State of Women and Child Development, Shri Munjpara Mahendrabhai ji, for sparing his time to grace this event. I am grateful to all the associations, industry associations present here, CII, FICCI Flow, ASSOCHAM, PSD Chamber of Commerce, who have joined us physically and virtually through the webcast. Your cooperation will be crucial for creating opportunities for women in various sectors, and we hope you continue to show your commitment to this cause. We gratefully acknowledge the presence of and support of trade unions today and hope they spread the message to all their members. The success stories today shared by our champions today is inspirational and will encourage others to follow. I would also extend my thanks to the UNICEF team, the team members of the task force constituted by Ministry of Labour and Employment on women workforce participation for playing an instrumental role in developing the advisory for employers. My thanks also to participants from ILO. I am grateful to the Ministry of Road Transport
and Ministry of Housing and Urban Affairs for supporting this initiative by bringing out the advisory for all contractors engaging building and construction women workers. Our heartfelt thanks also extend to members of the press who have graced us with their presence. Your role in amplifying the discourse on women participation in the workforce will be vital for spreading awareness. I am especially grateful to the secretaries in the Ministry of Women and Child Development and Ministry of Labour and Employment and the organizing committees and their support staff for the meticulous planning and hard work that has been the driving force behind the seamless execution of this event. This event will undoubtedly contribute to the positive momentum we seek in increasing the women participation in the workforce. We look forward to continued collaboration and progress towards a future where every woman has equal opportunities in the workforce. Thank you once again. I request everyone to join us for tea outside and in the level below. Thank you. Thank you very much. Thank you to all of you, ladies and gentlemen, for joining us for this joint program. As you step outside for tea, may I just remind you that we've got adequate arrangements just below the escalators. So may I request the majority of you to please proceed a level lower than the level that we are at, using the escalators for tea. Thank you very much. We also have arrangements for tea on this level itself, but may I request those of you who have already stepped out to please move to the lower level. चाय के लिए आप लोग अभी सभी को हम आमंत्रित करते हैं. चाय दोनों जगह पे है, ऊपर इस लेवल पे भी है और एस्केलेटर से अगर आप नीचे जाएं तो एक लेवल नीचे भी अवेलेबल है. Thank you very much.